तो आपने ये वायरल गेम ज़रूर खेला होगा गूगल क्रोम पे जब इंटरनेट नहीं होता है। तो आज पिक्टोब्लॉक्स के ऊपर हम यही गेम बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द कोड। सबसे पहले वी नीड टू हैव टू स्प्राइट्स। आई विल टेक कैट, ये वाला कैट, और दूसरा आई एम टेकिंग घोस्ट। यू कैन टेक वट एवर स्प्राइट यू वांट। मुझे ये घोस्ट पसंद आया है तो मैं ये दोनों स्प्राइट ले रहा हूँ। घोस्ट के साइज को लेट्स मेक इट टू 75 एंड कैट के साइज को लेट्स मेक इट टू 65। ठीक है। नाउ आई विल प्लेस माई कैट एट दिस पॉइंट एंड मेरा घोस्ट इज एट दिस एक्सट्रीम पॉइंट। बैकग्राउंड पे एक लाइन बना देते हैं so that it will be easy for us to understand the borderline. Here it is. What we will do next is cat को उस लाइन पे रख देंगे थोड़ा सा ऊपर, and here another character will be also somewhere here. Fine. So what I want to do is when the green flag is clicked, your cat will be waiting और वो जो घोस्ट है वो cat की तरफ आएगा. So सबसे पहले we'll go to ghost and we will say event में जाके when the green flag is clicked I want it to be at the same position, तो उसी position go to ये लोग position कर देता हूँ and then position में जा करके I will select forever block. Now what I will do is I'll go in motion again. I will bring it to the same point. यहाँ पर next I need to do is glide करना है मुझे and I want to glide it to x, right? So x का वैल्यू होगा -240. यहाँ पे मैं ग्लाइड 1.1 सेकेंड के लिए करता हूँ सो दैट थोड़ा सा स्लो हो जाए वो वाइब. लेट्स रन दिस एंड सी इट्स गोइंग टू गिव मी दिस वाइब कि वो आ रहा है बार बार. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मेक अनदर कोड जहाँ पर कैट क्या करेगा, जंप करेगा. तो लेट्स गो इन कैट में व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड आई विल से कि go to my this position which is जहाँ पे वो exactly भी है, right? And now अब events में जाओ and move it with space key. तो मैं यहाँ पर when space key is pressed I've taken this condition and now when the space key is pressed I will do one thing. I will go to control and repeat 10 blocks लूँगा और एक और repeat 10 blocks लूँगा. अब because I want to give it animation of jumping, तो पहले मुझे ऊपर जाना है. That means I have to change my y axis into positive and नीचे आने के लिए y axis को हम negative में लेंगे. तो change y by minus, so first it will be 8 and then again change y by -8. तो let's see this. Space press करने पे हो रहा है, it's going up and coming down. It's giving me complete animation of going up and down. First make this variable called as score. So come here, make a variable, name it score. We'll do it okay. ठीक है. To the ghost, what I will say is when the green flag is clicked, set variable to 0. That means set my score to 0. And now what I'm saying is जब ये completely successfully कर ले रहा है then change score by 1. Change score by 1. If you also want to play sound we will do that later on. Now score is changing, right? यहाँ पर मैं एक और condition दूंगा. When the green flag is clicked, right, we'll go in controls and we'll put it in forever and we will say if condition, right? अब if condition में हम ये बोलने वाले if it touches cat, so touches comes into sensing, so touching and I want to mention which character. So if my ghost is touching cat that means मेरा गेम खत्म हो गया है. तो let's do one thing for now. What we'll do is control में जा करके we will do stop all. ठीक है. So अभी के लिए let's see what's happening. When I click green flag, oh, now score is 0
एंड ये स्टॉप हो गया है। आई थिंक दिस इज गुड टू गो फॉर नाउ। इसके अंदर वी विल मेक फ्यू चेंजेस टू मेक इट लुक बेटर। व्हेन द गेम एंड्स व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ जाए कि गेम ओवर हो गया है एंड क्लिक द ग्रीन फ्लैग अगेन टू स्टार्ट द गेम। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल क्रिएट अनदर स्प्राइट, ओके, एंड यहाँ पे मैं पेंट में जा रहा हूँ एंड आई विल क्रिएट अ स्प्राइट। आई विल टेक अ टेक्स्ट एंड उसको मैं नाम दूंगा when click on green flag to start again. You can give it any color. I want it to be in the center, तो मैं इसको इस पॉइंट के अराउंड ला करके I will fix it here so that it looks in the center. Now this sprite should come when my character ghost is touching cat, right? So let's come back to ghost and let's go in blocks. यहाँ पर what I need to do is if it is touching cat, I will remove this block and I will use a concept called as broadcast. A new message and new message may I will say game over. So broadcast is you give a set of instruction to all the characters and whoever has to pick it, they will pick it. Now what I will do is I will go in this sprite which I had already created, this sprite. When the green flag is clicked, I have to ensure that this sprite is hidden. तो इसको मैं hide कर देता हूँ and now go in events. When I receive game over, I have to say that hey, come on, it's time that you show yourself. So now what we will do next is I'll go in looks. Now I also want to mention कि आपका score क्या है. So say hello for 2 seconds and hello के अंदर what you need to do is go in operator, join command को use करो. So you see this, right? Join apple के जगह पे your score is and then you need to mention your score and your score is in the variable. So you'll pick the score variable and put it here. Ghost will put game over, stop over here. Now let's test it. So okay, the score is increasing and yes, here it is your score which has been displayed, right? Now what next we need to do is we need to have some sound on this. So every time your character is getting a score, it should make some sound. So for that what you need to do is you need to go in ghost and यहाँ पर you will see sound on top, right? So go in this library and find some sound. Okay, so I have selected this sound boing, ठीक है? So one more sound for game over is what we need. So what we will do is we'll again go in sound and we will find one more sound. Fine. So now here when the score is changing by 1, what I will do is I'll add this sound and I will make it boing. Now let's play this. Perfect, perfect, perfect. Oh, good. Now so now we need to add another sound when the game ends, right? So what we will do is we'll go back to sound and we'll select this start sound when the game is over. Perfect. Let's see what's happening. Perfect, perfect. The score is increasing. Good one. तो इस प्रोजेक्ट में हमने बनाया गूगल क्रोम का सबसे वायरल गेम जब इंटरनेट नहीं होता है। आई होप मेरे साथ आपने भी ये प्रोजेक्ट इजीली बना लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि अगर इसके अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आप क्या करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।